ॐ श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar. Namaskar. Today we read chapter 91 of the Ayodhya Kandam, which has 83 verses. The hospitality shown by sage Bharadwaja, who had acquired rare mystic powers by virtue of his austerities, to Bharata, his army, and the entourage, the kind of which could not be shown even by the ruler of the entire globe. आज हम एक नवतितम सर्ग का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 83 श्लोक हैं। भारद्वाज मुनि के द्वारा सेना सहित भरत का दिव्य सत्कार। कृत बुद्धिं निवासाय तत्रैव स मुनिस्तथा भरतं कैकेयी पुत्रं आतिथ्येन न्यमन्त्रयत्। जब भरत ने उस आश्रम में ही निवास का दृढ़ निश्चय कर लिया, तब मुनि ने कैकेयी कुमार भरत को अपना आतिथ्य ग्रहण करने के लिए न्योता दिया। The celebrated sage then invited to a hospitable reception Bharata, the son of Kaikeyi, who had made up his mind, as shown before, to stay in that very hermitage for that night. अब्रवीत् भरतस्तु एनं नन्विदं भवता कृतं पाद्यम् अर्घ्यम् अथातिथ्यं वने यद् उपपद्यते। ये सुनकर भरत ने उनसे कहा, मुने वन में जैसा आतिथ्य सत्कार संभव है वह तो आप पाद अर्घ और फल मूल आदि देकर कर ही चुके। Bharat for his part said to Bharadwaja, sure enough, the kind of hospitality which could possibly be arranged in a forest has already been shown by you to us just now in the form of water to wash our feet and hands and with fruits and roots. अथोवाच भरद्वाजो भरतं प्रहसन्निव जाने त्वां प्रीतिसंयुक्तं तुष्येः त्वं येन केनचित्। उनके ऐसा कहने पर भारद्वाज जी भरत से हंसते हुए से बोले, भरत, मैं जानता हूँ मेरे प्रति तुम्हारा प्रेम है, अतः मैं तुम्हें जो कुछ दूंगा उसी से तुम संतुष्ट हो जाओगे। Bharadwaj forthwith replied to Bharata as follows, laughing heartily as it were, I know you to be full of affection to me. As such, you are likely to be pleased with anything and everything that is offered to you. सेनायास्तु तवैव अस्याः कर्तुमिच्छामि भोजनं मम प्रीतिर्यथा रूपा त्वमर्हो मनुजर्षभ। किंतु इस समय मैं तुम्हारी सेना को भोजन कराना चाहता हूँ। नरश्रेष्ठ, इससे मुझे प्रसन्नता होगी और जिस तरह मुझे प्रसन्नता हो वैसा कार्य तुम्हें अवश्य करना चाहिए। I, however, only wish to feed this army of yours, and you ought to do that in which my pleasure lies, O jewel among men. किमर्थं चापि निक्षिप्य दूरे बलमिहागतः कस्मान् नेहोपायातोऽसि सबलः पुरुषर्षभ। पुरुष प्रवर, तुम अपनी सेना को किस लिए इतना दूर छोड़कर यहाँ आए हो? सेना सहित यहाँ क्यों नहीं आए? Moreover, wherefore did you come here encamping the army at a distance from my hermitage? Why did you not turn up here with the army and all, O jewel among men? भरत प्रत्युवाच इदं प्राञ्जलिः तं तपोधनं न सैन्येन अपयातो अस्मि भगवन् भगवद्भयात्। तब भरत ने हाथ जोड़कर उन तपोधन मुनि को उत्तर दिया,
भगवान, मैं आपके ही भय से सेना के साथ यहाँ नहीं आया। Bharata, with folded hands, replied as follows to the sage, whose only wealth was his asceticism. I did not turn up with the army for fear of displeasing you, O venerable sage. राज्ञा हि भगवन् नित्यं राजपुत्रेण वा तथा यत्नतः परिहर्तव्या विषयेषु तपस्विनः। प्रभु, राजा और राजपुत्र को चाहिए कि वे सभी देशों में प्रयत्न पूर्वक तपस्वी जनों को दूर छोड़कर रहे, क्योंकि उनके द्वारा उन्हें कष्ट पहुंचाने की संभावना रहती है। In fact, distance should always be maintained from ascetics, lest they be disturbed in their own lands by a king or a king's son under similar circumstances, Your Holiness. वाजिमुख्या मनुष्याश्च मत्ताश्च वरवारणाः प्रच्छाद्य भगवन् भूमिं महतीम् अनुयान्ति माम्। भगवान, मेरे साथ बहुत से अच्छे अच्छे घोड़े, मनुष्य और मतवाले गजराज हैं, जो बहुत बड़े भूभाग को ढक कर मेरे पीछे पीछे चलते हैं। Best specimens of horses as well as men and excellent elephants in rut are following me in my wake, occupying a large area. ते वृक्षान् उदकं भूमिम् आश्रमेषु अटजांस्तथा न हिंस्युः इति तेन अहम् एवागतः ततः। वे आश्रम के वृक्ष, जल, भूमि और पर्णशालाओं को हानि न पहुंचाएं, इसलिए मैं यहाँ अकेला ही आया हूँ। I came away from that place where the troops have been encamped all alone, accompanied by sage Vashishta, lest they should destroy the trees, foul the waters and land, as well as the huts in the hermitage. आनीयतामितः सेनेत्याज्ञप्तः परमऋषिणा तथा अनुचक्रे भरतः सेनायाः सम उपागमम्। तदंतर उन महर्षि ने आज्ञा दी कि सेना को यहीं ले आओ। तब भरत ने सेना को वहीं बुलवा लिया। Commanded by the eminent sage in the following words, let the army be brought hither. Bharata forthwith caused the army to be duly brought all the way to the hermitage accordingly. अग्निशालां प्रविश्याथ पीत्वापः परिमृज्य च अतिथ्यस्य क्रियाहेतोः विश्वकर्मणाम् आह्वयत्। इसके बाद मुनिवर भरद्वाज ने अग्निशाला में प्रवेश करके जल का आचमन किया और ओंठ पोंछकर भरत के आतिथ्य सत्कार के लिए विश्वकर्मा आदि का आह्वान किया। Entering the fire sanctuary, sipping water thrice according to the Shruti text, with the recitation of the divine names for self-purification, and wiping the lips twice according to the Vedic injunctions, the sage next invoked in the following words Vishwakarma, the architect of the gods, for providing hospitality to the army of Prince Bharata. आह्वये विश्वकर्माणमहं त्वष्टारम् एव च आतिथ्यं कर्तुमिच्छामि तत्र ते संविधीयताम्। वे बोले, मैं विश्वकर्मा त्वष्टा देवता का आह्वान करता हूँ। मेरे मन में सेना सहित भरत का आतिथ्य सत्कार करने की इच्छा हुई है, इसमें मेरे लिए वे आवश्यक प्रबंध करें। I invoke God Vishwakarma, who is also the divine carpenter, the Twasta. I wish to provide hospitality to the army of Prince Bharata. Let everything be got ready in that connection for me. आह्वये लोकपालां स्त्रीन् देवान् शक्र पुरोगमान् आतिथ्यं कर्तुमिच्छामि तत्र मे संविधीयताम्। जिनके अगुआ इंद्र हैं, उन 3 लोकपालकों का अर्थात इंद्र सहित यम, वरुण और कुबेर नामक देवताओं का मैं आवाहन करता हूँ। इस समय भरत का आतिथ्य सत्कार करना चाहता हूँ,
इसमें मेरे लिए वह लोग आवश्यक प्रबंध करें। I further invoke the presence of the three gods, Yama, Varuna, and Kubera, who are the guardians of the spheres, headed by Indra, the ruler of the gods. I wish to provide hospitality to the army of Prince Bharata. Let everything be got ready for me towards that end. प्राक् स्रोतसश्च या नदिः तिर्यक् एव च पृथिव्याम् अन्तरिक्षे च समायान्तु अद्यः सर्वशः। पृथ्वी और आकाश में जो पूर्व एवं पश्चिमी की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं, उनका भी मैं आवाहन करता हूँ, वह सब आज यहाँ पधारे। Let all the rivers that flow in an easterly direction, as well as those flowing in a westerly direction on the surface of the earth, as also in the aerial region, meet today in this tract of land. अन्याः श्रवन्तु मैरेयं सुरामन्याः सुनिष्ठिताम् अपराश्च उदकं शीतम् इक्षुकाण्ड रसोपमम्। कुछ नदियां मेरे प्रस्तुत करें, दूसरी अच्छी तरह तैयार की हुई सुरा ले आवें तथा अन्य नदियां के पौरुओं में होने वाले रस की भांति मधुर एवं शीतल जल तैयार करके रखें। Let some of those rivers bear along Myreya, that is a kind of wine made from date palms, others highly refined Sura, another species of wine made from jaggery, honey and flour, and still others cool water, delicious like the juice of sugarcane. आह्वये देवगन्धर्वान् विश्वास सुहाहुहून् तथैव अप्सरसो देवगन्धर्वैश्चापि सर्वशः। मैं विश्वासो, आहा और हुहु आदि देव गंधर्व का तथा उनके साथ समस्त अप्सराओं का भी आह्वान करता हूँ। I also invoke the presence of the celestial Gandharva, Vishvasu and Hahu and Haha and Hahu, and even so all the celestial nymphs along with other celestial Gandharvas. घृताचीमत विश्वाचीं मिश्रकेशी मलाम्बुषां नगदत्तां च हेमां च सोमां अद्रिकृतस्थलीम्। धृताची, विश्वाची, मिश्रकेशी, अलम्बुषा, नागदत्ता, हेमा, सोमा तथा आदिकृत स्थली अथवा पर्वत पर निवास करने वाले सोमा का भी मैं आह्वान करता हूँ। I invoke the Apsaras named Gritachi and Vishwachi, Mishrakeshi, Alambusa, Nagadatta, and Hema, and also Soma, who has taken up her abode on a mountain called Mahendra. शक्रं याश्चोपतिष्ठन्ति ब्रह्मणां याश्च भामिनीः सर्वस्तुम्बुरुना सार्धमाह्वये सपरिच्छदाः। जो अप्सराएं इंद्र की सभा में उपस्थित होती हैं तथा जो देवतांगनाएं ब्रह्मा जी की सेवा में जाया करती हैं, उन सब का मैं तुम्बुर के साथ आवाहन करता हूँ। वे अलंकारों तथा नृत्य अग्नियों के लिए उपेक्षित अन्याय उपकरणों के साथ यहाँ पधारें। I also invoke all the nymphs that wait upon Indra, the ruler of paradise, as also the dancing girls that wait upon Brahma in Brahmalok, along with their teacher, Tumbutu, and all the external appendages, such as the musical instruments. वनं कुरुषु यद् दिव्यं वासो भूषण पत्रवत् दिव्य नारीफलं शश्वत् तत् कौबेरम् इहैवतु। उत्तर कुरु वर्ष में जो दिव्य चेत्रथ नामक वन है, जिसमें दिव्य वस्त्र और आभूषण ही वृक्षों के पत्ते हैं और दिव्य नारियां ही फल हैं, कुबेर का वह सनातन दिव्य वन यहीं आ जाए। In the same way, let the celestial grove known by the name of Chaitratta, presided over by Kubera,
the guardian of the northern quarter, which is located in the land of Uttara Kurus in the north of India, and the trees of which are clothed with leaves in the form of heavenly raiment and jewels, and perpetually bear fruit in the form of heavenly damsels, actually appear at this very spot. इहमे भगवान् सोमो विदत्ताम् अन्नमुत्तमम् भक्ष्यं भोज्यं च शोष्यं च लेह्यं च विविधं बहु। यहाँ भगवान सोम मेरे अतिथियों के लिए उत्तम अन्न, नाना प्रकार के भक्ष्य, भोज्य, लेह और जोशी की प्रचुर मात्रा में व्यवस्था करें। Let the glorious moon god, the deity presiding over the annual plants, place at my disposal abundant, excellent food of every variety, consisting of 3 dishes requiring mastication, as well as those that can be gulped without mastication. विचित्राणि च माल्यानि पादप प्रच्युतानि च सुरादीनि च पेयानि मांसानि विविधानि च। वृक्षों से तुरंत चुने गए नाना प्रकार के पुष्प, मधु आदि पेय पदार्थ तथा नाना प्रकार के फलों के गूदे भी भगवान सोम यहाँ प्रस्तुत करें। Nay, those that can be sucked and those that require to be licked, and also lovely garlands dropped straight from the trees, also drinks such as wine and meats of various kinds may also appear. एवं समाधिना युक्तः तेजसा प्रतिमेन च शिक्षाः वर समायुक्तं सुव्रतश्च अब्रवीन् मुनिः। इस प्रकार उत्तम व्रत का पालन करने वाले भारद्वाज मुनि ने एकाग्रचित और अनुपम तेज से संपन्न हो शिक्षा शास्त्र में बताई गई उच्चारणी विधि और व्याकरण शास्त्रों का स्तोत्रोक्त प्रकृति प्रत्यय संबंधी स्वर से युक्त वाणी में उन सब का आह्वान किया। So did the sage of noble vows, who is rich in concentration of mind and endowed with matchless glory too, utter words of invocation pronounced according to the rules of phonetics and accented according to the rules of grammar. मनसा ध्यायतः तस्य प्राङ्मुखस्य कृताञ्जलेः आजग्मुः तानि सर्वाणि दैवतानि पृथक् पृथक्। इस तरह आह्वान करके मुनि पूर्व विमुख हो हाथ जोड़े मन ही मन ध्यान करने लगे। उनके स्मरण करते ही वे सभी देवता एक एक करके वहां आ पहुंचे। Even as the sage invoked the aforesaid gods with his mind, sitting with his face turned towards the east, his palms joined together in supplication, all these deities that had been invoked by the sage came one by one before him. मलयं दर्दुरं चैव ततः स्वेधनुधो अनिलः उपस्पृश्य भवौ युक्त्या सुप्रियात्मा सुखं शिवः। फिर तो वहां मल्ले और दूधर नामक पर्वतों का स्पर्श करके बहने वाली अत्यंत प्रिय और सुखदायिनी हवा धीरे धीरे चलने लगी, जो स्पर्श मात्र से ही शरीर के पसीने को सुखा देने वाली थी। Thereupon a cool breeze, which was most delightful to the touch and which wiped one's sweat through mere contact, blew gently, touching the Malaya and the Dharadura mountains, clothed with forests of sandalwood trees. ततो अभ्यवर्षन्त गणा दिव्याः कुसुमवृष्टयः देवदुन्दुभि घोषश्च दिक्षु सर्वासु सुश्रुवे। तत्पश्चात मेघगण दिव्य पुष्पों की वर्षा करने लगे। संपूर्ण दिशाओं में देवताओं की दुंदुभियों का मधुर शब्द सुनाई देने लगा। Then fell down thick showers of heavenly flowers, and the sound of celestial kettle drums were heard in all the quarters. उच्चोत्तमा वाता नुनृतुश्चाप्सरो गणाः प्रजगुर्देवगन्धर्वा वीणाः प्रमुमुचुः स्वरान्। उत्तम वायु चलने लगी, अप्सराओं के समुदायों का नृत्य होने लगा, देव गंधर्व गाने लगे और सब और
वीणाओं की स्वर लहरियां फैल गईं। Nay, excellent breezes began incessantly to blow, and bevies of celestial nymphs began to dance. Heavenly Gandharvas beautifully sang, and Veenas gave forth melodies. स शब्दो द्यां च भूमिं च प्राणिनां श्रवणानि च विवेशोच्चा वचः श्लक्ष्णः समो लयगुणान्वितः। संगीत का वह शब्द पृथ्वी, आकाश तथा प्राणियों के कर्ण कुहरों में प्रविष्ट होकर गूंजने लगा। आरोह अवरोह से युक्त वह शब्द कोमल एवं मधुर था, समताल से विशिष्ट और लय गुण से संपन्न था। That sound of vocal and instrumental music, which rose and fell at intervals, was soft and of a moderate pitch, and endowed with the virtue of a uniform measure of time, penetrated into heaven, earth, and the ears of living beings. तस्मिन् एवं गदे शब्दे दिव्ये श्रोत्रसुखे नृणां ददर्श भारतं सैन्यं विधानं विश्वकर्मणः। इस प्रकार मनुष्य के कानों का सुख देने वाला वह दिव्य शब्द हो ही रहा था कि भरत की सेना विश्वकर्मा मार्ग का निर्माण कौशल दिखाई पड़ा। While that heavenly melody, agreeable to the ears of men, came in that way, the army of Bharata beheld the handiwork of Vishwakarma. बभूव हि समा भूमिः समन्तात् पञ्चयोजनं शाद्वलैः बहुभिः चर्ना नीलवैडूर्य सन्निभैः। चारों ओर 5 योजन तक की भूमि समतल हो गई, उस पर नीलम और वेद्यु मणि के समान नाना प्रकार की घनी घास छा रही थी। The entire stretch of land within a radius of 40 miles not only turned even but was also carpeted with many patches of fresh grass resembling blue cat's eye gems in a hue. तस्मिन् बिल्वाः कपित्थाश्च पनसा बीजपूरकाः आमलक्यो बभूवुश्च सूताश्च फलभूषिताः। स्थान स्थान पर बेल, केत, कटल, आंवला, बिजोरा तथा आम के वृक्ष लगे थे जो फलों से सुशोभित हो रहे थे। In that land sprung up Bel, Kapita, which literally means which monkeys dwell, Panasa, the breadfruit, Bijapuraka, citrons, Amalika, the Embolica myloban, and mango trees adorned with fruits. उत्तरेभ्यः कुरुभ्यश्च वनं दिव्योपभोगवत् आजगाम नदी सौम्या तीरजैः बहुभिर्वृता। उत्तर कुरुवर्ष से दिव्य भोग सामग्रियों से संपन्न चैत्ररथ नामक वन वहां आ गया, साथ ही वहां की रमणीय नदियां भी आ पहुंची जो बहुसंख्यक तटवर्ती वृक्षों से घिरी हुई थी। Nay, from the territory of the Uttara Kuru came the grove presided over by Kubera, the god of riches, and known by the name of Chaitrata, rich in products worthy of being enjoyed by heavenly beings, as well as delightful streams hemmed in with the number of trees growing on its banks. चतुश्शालिनी शुभ्राणि शालाश्च गजवाजिनां हर्म्य प्रासाद संयुक्त तोरणानि शुभानि च। उज्जवल 4-4 कमरों से युक्त गृह अथवा ग्रह युक्त चबूतरे तैयार हो गए, हाथी और घोड़ों के रहने के लिए शालाएं बन गई, अटलिकाओं तथा संत मंजिलों महलों से युक्त सुंदर नगर द्वार भी निर्मित हो गए। There stood up white mansions, each consisting of 4 rooms, as well as stables for elephants and horses, and charming city gates with mansions and palaces. सितमेघनिभं चापि राजवेश्म सुतोरणं शुक्लमाल्यकृताकारं दिव्यगन्धसमुक्षितम्। राज परिवार के लिए बना हुआ सुंदर द्वार से युक्त दिव्य भवन
श्वेत बादलों के समान शोभा पा रहा था। उसे सफेद फूलों की मालाओं से सजाया और दिव्य सुगंधित जल से सींचा गया था। There also stood a royal palace looking like a white cloud and provided with a lovely arched doorway, nay, decorated with white garlands and sprinkled with exquisite scents. चतुरश्रम संबाधम शयनासन यानवत् दिव्यैः सर्वरसैः युक्तम दिव्य भोजन वस्त्रवत्। वह महल चौकोना तथा बहुत बड़ा था। उसमें संकीर्णता का अनुभव नहीं होता था। उसमें सोने, बैठने और सवारियों के रहने के लिए अलग अलग स्थान थे। वहां सब प्रकार के दिव्य रस, दिव्य भोजन और दिव्य वस्त्र प्रस्तुत थे। It was quadrilateral in shape, commodious, furnished with couches, seats, and palanquins, supplied with all delicious drinks, and provided with excellent food and clothing. उपकल्पित सर्वान्नं दौत निर्मल भाजनं क्लुप्त सर्वासनं श्रीमत् स्वास्तीर्ण शयनोत्तमम्। सब तरह के अन्न और धुले हुए स्वच्छ पात्र रखे गए थे। उस सुंदर भवन में कहीं बैठने के लिए सब प्रकार के आसन उपस्थित थे और कहीं सोने के लिए सुंदर शायें बिछी थी। But victuals of every description had been kept ready there, as well as cleaned vessels free from dirt. All kinds of seats had been arranged at proper places, and the palace looked charming with superb couches duly covered with counterpanes. प्रविवेश महाबाहुः अनुज्ञातो महर्षिणा वेश्म तद् रत्न संपूर्णं भरतः कैकेयी सुतः। Permitted by the eminent sage Bharatwaja, Prince Bharata, son of Kaikeyi, who was distinguished by unusually long arms, duly entered the palace, richly stocked with precious stones. अनुजग्मुश्च ते सर्वे मन्त्रिणः सपुरोहिताः बभूवुश्च मुदा युक्ताः तं दृष्ट्वा वेश्म संविधिम्। All the aforesaid councillors, accompanied by family priests, also followed suit and were filled with delight to see that excellent get-up of houses. महर्षि भारद्वाज की आज्ञा से केकई पुत्र महाबाहु भरत ने नाना प्रकार के रत्नों से भरे हुए उस महल में प्रवेश किया। उनके साथ साथ पुरोहित और मंत्री भी उसमें गए। उस भवन का निर्माण कौशल्य देखकर उन सब लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई। तत्र राजासनं दिव्यं व्यजनं छत्रमेव च भरतो मंत्रिभिः सार्धम् अभ्यवर्तत राजवत्। उस भवन में भरत ने दिव्य राज सिंहासन, चवर और छत्र भी देखे तथा वहां राजा श्री राम की भावना करके मंत्रियों के साथ उन समस्त राज्य भोग वस्तुओं की प्रदक्षिणा की। Along with the councillors, Bharata went clockwise round the excellent royal throne, as well as round the whisk made from the tail of a yak, and the royal umbrella kept there as if round a sovereign. आसनं पूजयामास रामाय अभिप्रणम्य च बालव्यजनमादाय न्यषीदत् सचिवासने। सिंहासन पर श्री श्यामचंद्र जी महाराज विराजमान हैं, ऐसी धारणा बनाकर उन्होंने श्री राम को प्रणाम किया और उस सिंहासन की भी पूजा की। फिर अपने हाथ में चंवर ले वे मंत्री के आसन पर जा बैठे। Bowing down low to Sri Rama as though the latter was seated on it, he paid homage to the throne itself and taking the whisk sat down on the seat meant for the chief minister. आनुपूर्व्यान् निषेधुश्च सर्वे मन्त्रिपुरोहिताः ततः सेनापतिः पश्चात् प्रशास्ता च न्यषीदत। तत्पश्चात पुरोहित और मंत्री भी क्रमश अपने योग्य आसनों पर बैठे। फिर सेनापति और प्रशस्ता छावनी की रक्षा करने वाले भी बैठ गए। All the councillors and family priests too sat down in order of precedence. Then sat down the generalissimo and afterwards the officer in charge of the encampment.
ततः तत्र मुहूर्तेन नद्यः पायसकर्दमाः उपातिष्ठन्त भरतं भरद्वाजस्य शासनात्। तदंतर वहां 2 ही घड़ी में भारद्वाज मुनि को की आज्ञा से भरत की सेवा में नदियां उपस्थित हुई, जिनमें कीच के स्थान में खीर भरी थी। Then, after a short while, streams having milk thickened with rice in place of mud flowed past Bharata at that site at the command of Bharatwaja. आसाम् उभयतः कूलं पाण्डु मृत्तिकल कलेपनाः रम्याश्च अवस्था दिव्या ब्राह्मणस्य प्रसादजाः। नदियों के दोनों तट ब्रह्म ऋषि भारद्वाज की कृपा से दिव्य एवं रमणीय भवन प्रकट हो गए, जो चूने से पुते हुए थे। On both the banks of these streams rose excellent and lovely houses plastered with lime and brought into being by the grace of the Brahmana sage Bharatwaja. तेनैव च मुहूर्तेन दिव्याभरणभूषिताः आगुर्विशति सहस्राः ब्रह्मणा प्रहिताः स्त्रियः। मुहूर्त में ब्रह्मा जी की भेजी हुई दिव्य आभूषणों से विभूषित 20,000 दिव्यांगनाएं वहां आई। Nay, during that very hour arrived there 20,000 women adorned with excellent jewels and sent by Brahma, the creator. सुवर्णमणिमुक्तेन प्रबालेन च शोभिताः आगुर्विंशतिसहस्राः कुबेरप्रहिताः स्त्रियः। आगुर्विंशतिसहस्रा नन्दना अप्सरोगणाः नारदस्तुम्बुरुः गोपः प्रभया सूर्यवर्चसः। इस तरह स्वर्ण मणि युक्त मुक्ता और मूंगे के आभूषणों से सुशोभित कुबेर की भेजी हुई 20,000 दिव्य महिलाएं भी वहां उपस्थित हुई, जिनका स्पर्श पाकर पुरुष उन्मादग्रस्त सा दिखाई देता है। इनके सिवाय नंदन वन से 20,000 अप्सराएं भी आई। नारद, तंबुरु और गोप अपनी कांति से सूर्य के समान प्रकाशित होते थे। वे तीनों गंधर्वराज भरत के सामने गीत गाने लगे। There also came 20,000 women decked with ornaments of gold, gems and pearls and coral sent by Kubera. There also arrived from the Nandana grove in paradise 20,000 celestial nymphs, embraced but by whom a man looked as though seized with a fit of insanity. The following chiefs of the Gandharvas, Narada, Tumburu and Gopa, who shone like the sun because of their splendor, began to sing before Bharata. नारदस्तुम्बुरुः गोपः प्रभया सूर्यवर्चसः एते गन्धर्वराजानो भरतस्य अग्रतो जगुः। अलम्बुषा मिश्रकेशी पुण्डरीकाथ वामना उपानृत्यन्त भरतं भरद्वाजस्य शासनात्। अलम्बुषा, मिश्रकेशी, पुंडरीका और वामना ये 4 अप्सराएं भारद्वाज मुनि की आज्ञा से भरत के समीप नृत्य करने लगी। Alambusha, Mishrikeshi and Pundarika and Vamana started dancing in the presence of Bharata under the orders of Bharatwaja. यानि माल्यानि देवेषु यानि चैत्ररथे वने प्रयागे तानि अदृश्यन्त भरद्वाजस्य तेजसा। जो फूल देवताओं के उद्यानों में और जो चैत्ररथ वन में हुआ करते हैं, वे महर्षि भारद्वाज के प्रताप से प्रयाग में दिखाई देने लगे। Those celestial flowers which are found solely among the gods and those which exist in the grove named Chaitratha belonging to Kubera, the god of riches, were seen at Prayag thanks to the spiritual might of Bharatwaja. बिल्वा मार्दंगिका आसन शम्याग्राहा विभीतकाः अश्वत्था नर्तकाश्च आसन भरद्वाजस्य तेजसा। भारद्वाज मुनि के तेज से बेल के वृक्ष मृदंग बजाते, बेहड़े के पेड़ शाम्य नामक ताल देते और पीपल के वृक्ष वहां नृत्य करते थे। Bale trees assumed the role of playing on clay tom-toms,
Vibhitika trees picked up a pair of cymbals known by the name of Samya in order to strike them so as to keep time, and the people trees played the role of the dancers thanks to the spiritual might of Bharadwaja. ततः सरलतालाश्च तिलकाः शतमालकाः प्रहृष्टाः तत्र सम्पेतुः कुब्जा भूत्वा अथ वामनाः। तदंतर देवदारू, ताल, तिलक और तमाल नामक वृक्ष कुबड़े और बौने बनकर बड़े हर्ष के साथ भरत की सेवा में उपस्थित हुए। Then the deodars, the palmyra and the tilaka trees along with the tamala trees arrived there, highly rejoicing, assuming the form of hunchbacks and dwarfs to render services to Bharata. शिंशपा आमलकी जम्बुः उर्याश्चान्याः कानने लताः मालती मल्लिका जातिर्याश्चान्याः कानने लताः प्रथमा विग्रहं कृत्वा भरद्वाजाश्रमे अवसन्। शिशापा, आमल की और जम्बू आदि स्त्रीलिंग वर्ष तथा मालती, मल्लिका और जाति आदि वन की लताएं नारी का रूप धारण करके भारद्वाज मुनि के आश्रम में आ बसी। Simsapad, the Ashoka trees, the Amalikas, Jambus, the rose apple trees, Malati, Mallika and Jati, and whatever other trees bearing female names and creepers there were in the forest, took up their abode in the hermitage of Bharadwaja, assuming the form of young women in order to be able to serve Bharata. सुरां सुरापाः पिबत पायसं च बुभुक्षिताः मांसानि च सुमेध्यानि भक्ष्यन्तां यो यदिच्छति। वे भरत के सैनिकों को पुकार पुकार कर कहती थी, मधु का पान करने वाले लोगों, लो ये मधु पान कर लो। तुम में से जिन्हें भूख लगी है वह सब लोग यह खीर खाओ और परम पवित्र फलों के गूदे भी प्रस्तुत है, इनका आस्वादन करो, जिसकी जो इच्छा हो वही भोजन करो। They said to the troops, drink wine, O soldiers addicted to drinking, and drink milk thickened with rice, O troops stricken with hunger. Let meats also eminently fit for sacrifice be eaten as you will. One will get whatever one seeks. उच्छोद्य स्नापयन्ति स्म नदीतीरेषु वल्गुषु अपि एकमेकं पुरुषं प्रमदाः सप्त च अष्ट च। 7-8 तरुणी स्त्रियां मिलकर एक एक पुरुष को नदी के मनोहर तटों पर उपटन लगा लगा कर नहलाती थी। A batch of 7 or 8 young women bathed every single man on the charming river banks after first daubing his body with a fragrant paste of oil seeds and then rubbing off the dirt. संवाहन्त्यः समापेतुः नार्यो विपुल्ललोचनाः परिमृज्य तदान अन्योन्यं पाययन्ति वरांगनाः। बड़े बड़े नेत्र वाली सुंदरी रमणीय अतिथियों का पैर दबाने के लिए आई थी। वह उनके भीगे हुए अंगों को वस्त्र से पोंछकर शुद्ध वस्त्र धारण कराकर उन्हें स्वादिष्ट पेय दूध आदि पिलाती थी। There also appeared on the scene women with big eyes, kneading the feet of the men, wiping off the moisture on their body. The lovely women gave them delicious beverages to drink in seclusion. हयान् गजान् करान् उष्ट्रां तथैव सुरभेः सुतान् अभोजयन् वाहनपाः तेषां भोज्यं यथाविधि। तत्पश्चात भिन्न भिन्न वाहनों की रक्षा में नियुक्त मनुष्यों ने हाथी, घोड़े, गधे, ऊंट और बैलों की बलि भांति दाना, घास आदि का भोजन कराया। The keepers created and detailed by Bharadwaja of the animals carrying Bharata's men on their backs duly fed the horses, the elephants, donkeys, camels, as well as the bullocks and articles fit for their consumption. इक्षुंश्च मधुलाजांश्च भोजयन्ति स्म वाहनान् इक्ष्वाकु वरयोधानां चोदयन्तो महाबलाः।
ईश्वर कुकुल के श्रेष्ठ योद्धाओं की सवारी में आने वाले वाहनों को वह महाबली वाहन रक्षक जिन्हें महर्षि ने सेवा के लिए नियुक्त किया था, प्रेरणा दे देकर गन्ने के टुकड़े और मधु मिश्रित लावे खिलाते थे। Coaxing the animals, carrying the gallant warriors of the Ikshvaku race on their back, the aforesaid very mighty keepers fed them with pieces of sugarcane as well as with fried grains of paddy soaked in honey. न अश्वबन्धो अश्वमान् न गजं कुञ्जर ग्रहः मत्त प्रमत्त मुदिता सा चमूहु तत्र संबभौ। घोड़े बांधने वाले साइंसों को अपने घोड़े का और हाथी वाहन को अपने हाथी का कुछ पता नहीं था। सारी सेना वहां मत प्रमत और आनंद मगन प्रतीत होती थी। The groom did not recognize the horse in his charge, nor did the elephant keeper recognize his charge, since the animals were fed and groomed so well that they got changed beyond recognition. The aforesaid army appeared intoxicated, maddened, and enraptured on that spot. तर्पिताः सर्वकामैश्च रक्तचन्दनरूषिताः अप्सरो गणसंयुक्ताः सैन्या वाचम् उदीरयन्। संपूर्ण मनोवांछित पदार्थों से तृप्त होकर लाल चंदन से चर्चित हुए सैनिक अप्सरों का संयोग पाकर निमांकित बातें कहने लगे। Satiated with all desired enjoyments and smeared with red sandal paste, the troops attended by hosts of celestial nymphs uttered the following words. नैव अयोध्यां गमिष्यामो न गमिष्याम दण्डकान् कुशलं भरतस्य अस्तु रामस्य अस्तु तथा सुखम्। अब हम अयोध्या नहीं जाएंगे, दंड कारण्य से में भी नहीं जाएंगे। भरत सुकुशल रहे जिनके कारण हमें इस भूतल पर स्वर्ग का सुख मिला, तथा श्री रामचंद्र जी भी सुखी रहे जिनके दर्शन के लिए आने पर हमें इस दिव्य सुख की प्राप्ति हुई। We shall neither return to Ayodhya nor go to the Dandaka forest. Let all be well with Bharata, because of whom we are enjoying heavenly delights here on earth. And let lasting happiness be the lot of Sri Rama, as a forestate of whose blessed sight we have secured these heavenly enjoyments. इति पादाथ योधाश्च हस्ति अश्व आरोह बंधकाः अनाथास्थं विधिं लब्ध्वा वाचम् एताम् उदीरयन्। इस प्रकार पैदल सैनिक तथा हाथी सवार, घुड़सवार, साइंस और महावत आदि उस सत्कार को पाकर स्वच्छंद ही हो उपयुक्त बातें कहने लगे। So did the foot soldiers, as well as those mounted on horses and elephants, and their keepers too, who in their inebriety considered themselves independent, without a master, on receiving such attentions from the sage, utter the aforesaid words. संप्रहृष्टा विनेदुस्ते नराः तत्र सहस्रशः भरतस्य अनुयातारः स्वर्गो अयमिति च अब्रुवन्। भरत के साथ आए हुए हजारों मनुष्य वहां का वैभव देखकर हर्ष के मारे फूले नहीं समाते थे और जोर जोर से कहते थे, ये स्थान स्वर्ग है। Extremely rejoiced to see that the untold affluence and power of the sage, those men on that spot who had followed Bharata in his journey to Chitrakoot to bring Sri Rama back to Ayodhya, in their thousands thundered and said, "This is heaven indeed." नृत्यन्तश्च हसन्तश्च गायन्तश्चैव सैनिकाः समन्तात् परिधावन्तो माल्योपेताः सहस्रशः। सहस्त्रों सैनिक फूलों के हार पहनकर नाचते, हंसते और गाते हुए सब और दौड़ते फिरते थे। Adorned with garlands, the troops in their thousands ran in every direction, dancing and laughing and singing. ततो भुक्तवतां तेषां तदन्नमृतोपमं दिव्यान् उदीक्ष्य भक्ष्यांस्तान् अभवद् भक्षणे मतिः।
उस अमृत के समान स्वादिष्ट अन्न का भोजन कर चुकने पर भी वे उन दिव्य भक्ष्य पदार्थों को देखकर उन्हें पुनः भोजन करने की इच्छा हो जाती थी। In spite of their having partaken of that ambrosia-like food, their minds felt inclined to eat again the moment they saw those excellent dishes. प्रेष्याश्चेटयश्च बद्वश्च बलस्ताश्चापि सर्वशः बभूवुस्ते वृषं प्रीताः सर्वे च अहतवाससः। दास दासियां, सैनिकों की स्त्रियां और सैनिक सब के सब नूतन वस्त्र धारण करके सब प्रकार से अत्यंत प्रसन्न हो गए थे। Servants and maidservants, as also the wives of the troops, as well as the troops themselves, they all felt highly delighted. Nay, all were supplied with a new set of clothes. कुंजराश्च करो उष्ट्राश्च गो अश्वाश्च मृगपक्षिणः बभूवुः सुभृतास्तत्र नातो हि अन्य अकल्पयत्। हाथी, घोड़े, गधे, ऊंट, बैल, मृग तथा पक्षी भी वहां पूर्ण तृप्त हो गए थे, अतः कोई दूसरी किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता था। Elephants and donkeys and camels too, as well as bullocks and horses, nay, even deer and birds in that region were fully nourished, hence they coveted nothing else. न शुक्लवासाः तत्रासीत् क्षुधितो मलिनो अपि वा रजसा ध्वस्तकेशो वा नरः कश्चित् अदृश्यत। उस समय वहां कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं दिखाई देता था जिसके कपड़े सफेद ना हो, जो भूखा या मलिन रह गया हो, अथवा जिसके केश धूल से भूसारित हो गए हों। No one in that area was clad in soiled attire, hungry, or even untidy, nor was any man seen with his hair soiled with dust. आजैश्चापि च वाराहैर्निष्टान् वरसञ्चयैः फलनिर्यूहसंसिद्धैः सूपैः गन्धरसान्वितैः पुष्पध्वजवतीः पूर्णाः शुक्लस्य अन्नस्य च अभितः ददृशुः विस्मिताः तत्र नरा लौहिः सहस्रशः। अजवाइन मिलाकर बनाए गए बाराही कंद से तैयार किए गए तथा आम आदि फलों के गर्म किए हुए रस में पकाए गए उत्तमोत्तम व्यंजनों के संग्रह, सुगंधा युक्त रसावली दालों तथा श्वेत रंग के भांतों से भरे हुए सहस्त्र स्वर्ण आदि के पात्र वहां सब और रखे हुए थे, जिन्हें फूलों की ध्वजों से सजाया गया था। भरत के साथ आए हुए सब लोगों ने उन पात्रों को आश्चर्यचकित होकर देखा। Struck with wonder, people beheld there, placed all around in thousands, gold vessels decorated with floral designs and filled with excellent seasoned articles of food prepared from bulbs known by the name of Varahi, flavored with Thychotis or Jovan, as well as boiled in the decoction of fruits, as well as with flavorsome boiled pulses and spotlessly white boiled rice. बभूवुः वनपार्श्वेषु कूपाः पायसकर्दमाः ताश्च कामदुघा गावो द्रुमाश्च आसन् मधुच्युतः। वन के आसपास जितने कुएं थे उन सब में गाढ़ी स्वादिष्ट खीर भरी हुई थी। वहीं की गौएं कामधेनु सब प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाली हो गई थी और उस दिव्य वन के वृक्ष मधु की वर्षा करते थे। The wells in the precincts of the forest around the hermitage of Bharadwaja had their mud transformed into milk thickened with rice and sugar. The cows in that region were transformed into cows of plenty, and the trees dripped with honey. वाप्यो मेरय पूर्णाश्च मृष्ट मांसचयैर्वृताः प्रतप्त पीटरैः चापि मार्गम आयूर कौकुटैः। भरत की सेना में आए हुए निषाद आदि निम्न वर्ग के लोगों की तृप्ति के लिए वहां मधु से भरी हुई बावड़ियां प्रकट हो गई थी
तथा उनके तटों पर तपे हुए पिठर कुंड में पकाए गए मृग, मोर और मुर्गों के स्वच्छ मांस भी ढेर के ढेर रख दिए गए थे। The bigger wells with flights of stairs got filled with mairei, a kind of intoxicating drink, and were banked with heaps of dainty meat of deer, peacocks, and fowls, dressed in intensely heated earthen vessels, perhaps for the use of the Nishads and other low-caste people in the army of Bharata. पात्रिणां च सहस्राणि स्थालीनां नियुतानि च न्यर्बुधानि च पात्राणि शातकुंभमयानि च। वहां सहस्त्रों सोने के अन्न पात्र, लाखों व्यंजन पात्र और लगभग 1 अरब थालियां संग्रहित थी। Thousands of gold vessels containing boiled rice, lakhs of gold cauldrons holding seasoned articles of food, and millions of plates also made of gold were to be seen there. ताल्यः कुम्भ्यः करभ्यश्च दधिपूर्णाः सुसंस्कृताः यौवनस्तस्य गौरस्य कपित्तस्य सुगन्धिनः कृदाः पूर्णाः रसालस्य दग्धनः श्वेतस्य च अपरे बभूवुः पायसस्य अन्ये शर्कराणां च संचयाः। पिठर छोटे छोटे घड़े तथा मटके दही से भरे हुए थे और उनमें दही की सुस्वादु बनाने वाले सौंठ आदि मसाले पड़े हुए थे। एक पैर पहले के तैयार किए हुए केसर मिश्रित पीत वर्ण वाले सुगंधित तर्क के कई तालाब भरे हुए थे। जीरा आदि मिलाए हुए तक रसाल सफेद दही तथा दूध के भी कई कुंड पृथक पृथक भरे हुए थे और शक्करों के कई ढेर लगे थे। There appeared clay pans, smaller earthen vessels, and big broad-mouthed clay vessels full of curds, duly spiced with dried ginger. The tanks full of fragrant buttermilk tinged yellow with saffron and prepared a few hours back, as well as of buttermilk flavored with cumin seeds, others full of white curds and still others of milk, and also heaps of sugar. कल्कां चूर्ण कषायांश्च स्नानानि विविधानि च ददृशुः भाजनस्थानि तीर्थेषु सरितां नराः। स्नान करने वाले मनुष्य को नदी के घाटों पर भिन्न भिन्न पात्रों में पीसे हुए आंवले, सुगंधित चूर्ण तथा और भी नाना प्रकार के स्नानोपयोगी पदार्थ दिखाई देते थे। On the stairs for descent to the rivers, people saw kept in large pans crushed embolica mylobuns and powdered fragrant substances and varied articles such as oils, hot water, etc., useful for a bath. शुक्लान् अंशुमतश्चापि दन्तधावन संचयान् शुक्लां चन्दन कल्कांश्च समुद्रेषु अवतिष्ठथ। साथ ही ढेर के ढेर दातन जो सफेद पूंछ वाले थे वहां रखे हुए थे। संपुटों में घिसे हुए सफेद चंदन विद्यमान थे। इन सब वस्तुओं को लोगों ने देखा। They further beheld at every place in that area bundles of fresh white twigs with their one end crushed for being used as a toothbrush, as well as pastes of white sandalwood for being used as a shampoo, kept in round covered wooden cases. दर्पणान् परिमृष्टांश्च वाससां चापि संचयान् पादुकोपानहं चैव युग्मान् यत्र सहस्रशः। इतना ही नहीं, वहां बहुत से स्वच्छ दर्पण, ढेर के ढेर वस्त्र और हजारों जोड़े खड़ाऊं और जूते भी दिखाई देते थे। Perfectly cleaned mirrors as well as piles of textiles and also thousands of pairs of wooden sandals and leather shoes were seen there. आञ्जनीः कङ्कतान् कूर्चात् छत्राणि च धनुंषि च मर्मत्राणानि चित्राणि शयनानि अन्यासनानि च। काजलों सहित कांजरोटे, कंगे, कूर्चे, थकरी या ब्रश,
छत्र, धनुष, मर्म स्थानों की रक्षा करने वाले कवच आदि तथा विचित्र शैया और आसन भी वहां दृष्टिगोचर होते थे। Small caskets containing collyrium, combs, brushes for combing mustaches and beards, nay, umbrellas and bows, armors of different kinds of beds and seats were seen there. प्रतिपान क्रधान पूर्णान गजवाजिनाम आवकाश्य सुतां कृदान स उत्पल पुष्करान आकाश वर्ण प्रतिमान स्वच्छ तोयान सुखोप्लवान। गधे, ऊंट, हाथी और घोड़े के पानी पीने के लिए कई जलाशय भरे थे, जिनके घाट बड़े सुंदर और सुखपूर्वक उत्तरने योग्य थे। उन जलाशयों में कमल और उत्पल शोभा पा रहे थे। उनका जल आकाश के समान स्वच्छ था तथा उनमें सुखपूर्वक तैरा जा सकता था। Tanks full of water worth drinking, feed for donkeys, camels, elephants, and horses, as well as tanks provided with excellent descents where one could easily take a plunge, full of lilies and lotuses resembling the sky in hue. नील वैदूर्य वर्णांश्च मृदून् यव संचयान् निर्वापार्थं पशूनां ते ददृशुः तत्र सर्वशः। पशुओं के खाने के लिए वहां सब और नील और वेद्युमणि के समान रंग वाली हरी एवं कोमल घास की ढेरियां लगी थी। उन सब लोगों ने वह सारी वस्तुएं दिखी। Containing limpid waters and pleasing to bathe in, and heaps of tender grass resembling the blue cat's eye gem in hue for the consumption of animals were all seen by the people there. व्यस्मयन्त मनुष्यास्ते स्वप्नकल्पं तदद्भुतं दृष्ट्वा आतिथ्यं कृतं तादृक् भरतस्य महर्षिणा। महर्षि भारद्वाज के द्वारा सेना सहित भरत का किया हुआ वह अनिर्वचनीय आतिथ्य सत्कार अद्भुत और स्वप्न के समान था। उसे देखकर वह सब मनुष्य आश्चर्यचकित हो उठे। The aforesaid men were amazed to see that entertainment wonderful like a dream provided so long for Bharata by the eminent sage Bharatwaja. इति एवं रममाणानां देवानां इव नन्दने भरद्वाजाश्रमे रम्ये सा रात्रिः व्यतीति अवर्तत। जैसे देवता नंदन वन में विहार करते हैं, उसी प्रकार भारद्वाज मुनि के रमणीय आश्रम में यथेष्ट क्रीड़ा विहार करते हुए उन लोगों की वह रात्रि बड़े सुख से बीती। While the people that had followed Bharata in his journey to Chitrakuta were still busy enjoying, as aforesaid, in that lovely hermitage of Bharatwaja, the delights provided by the sage, like so many gods in the Nandana grove in paradise, that night passed away in happiness. प्रतिजग्मुश्च ता नद्यो गन्धर्वाश्च यथागतं भरद्वाजम् अनुज्ञाप्य ताश्च सर्वा वरांगनाः। तत्पश्चात वे नदियां, गंधर्व और समस्त सुंदरी अप्सराएं भारद्वाज की आज्ञा ले जैसी आई थी उसी प्रकार लौट गईं। Taking leave of Bharatwaja, those rivers as well as the Gandharvas, the celestial musicians, and also the lovely women which were the celestial nymphs, returned even as they had come. तथैव मता मदिरोत्कटा नराः तथैव दिव्य अगुरु चन्दनोक्षिताः तथैव दिव्या विविधा श्रगुत्तमाः प्रधक् विकीर्णा मनुजैः प्रमर्दिताः। सवेरा हो जाने पर भी लोग उसी प्रकार मधुपान से मत एवं उन्मत्त दिखाई देते थे। उनके अंगों पर दिव्य अगर युक्त चंदन का लेप ज्यों का त्यों दृष्टिगोचर हो रहा था। मनुष्य के उपभोग में लाए गए नाना प्रकार के दिव्य उत्तम पुष्पहार भी उसी अवस्था में पृथक पृथक बिखरे पड़े थे। The people, however, remained flushed and drunk with wine, much in the same way even at dawn. They stood smeared with the exquisite paste of aloe wood and sandalwood, even as before, and the excellent celestial garlands of various kinds lay strewn here and there separately, as fresh as they were at the beginning, crushed as they were by men through constant use for the whole night. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये
आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 91तमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित अर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 91वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 91 in the Ayodhya Kandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. ओम श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। Om Apadamapahārtāram Dātāram Sarvasampadam Lokabhiramam Shri Ramam Bhuyo Bhuyo Namamyaham. Dhanyavad. धन्यवाद।